Assalamu alaikum. Okay, now in this video, we're going to have a look at appending as well as a couple of more things. पहले हम appending देख लेते हैं, आई थिंक merging साथ देख लेते हैं. दोनों क्या थोड़ा सा concept different है and you need to distinguish between these two. That is because both of them are slightly different. So uh, let's have a look at things that we might have covered before. So I guess ये चीज़ें हैं. CSV हमें समझ आ गया है क्या है. Import करना आ गया है हमें. We've cleaned the data as well. We've seen the three modes. Modeling अभी कुछ देर में देख लेते हैं. And let's look at appending now. And maybe merging as well. That's because although they are not very related concepts, but merging भी कहीं ना कहीं अहम हो सकती है, जैसे कि हमारा सिनेरियो है. तो we're going to have a look at these things. के लिए एक चीज वाजे कर दूं आपको कि एक 2019 की जो फाइल थी, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बाद में एक एरर आया था. तो उसको कोई मुश्किल नहीं है, दूर किया जा सकता है इजीली. एन ए वैल्यूज ही थी जो रिप्लेस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी. सो अगेन जस्ट अ स्मॉल टिप. For instance, if this 2019, there's some NA value that you want to replace, what you can do is just select those, uh, you know, values. सन ये 2019 में जो तीन वैल्यूज में शक है जिनके ऊपर के जहां मे बी कहीं पर यू नो आ सकता है NA वैल्यूज, उन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें. एंड देन सिंपली यू कैन यूज योर replace values option, and then you can say that you want to convert NA into 0 or 1 for that matter, depending on the situation, but 0 in this particular case. I'm not going to do this again because this is already clean, but this is just a side note to the last lecture we had, the last video lecture that I had. Okay, so now what I really want to do, and ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये error जो है ना ये दिखा रहा है, जो कि पिछली फाइल का था, but I have managed to eradicate that. And we can check it out, because if you refresh it and the errors do not appear, that means that things are okay, things are fine. And if there are any errors, there's no need to panic. थोड़ा सा टाइम लगा के फिगर किया जा सकता है एग्जैक्टली कि एरर किस नेचर का है. ज्यादातर वही मामलात हैं जो मैं आप पहले डिस्कस कर चुका हूँ. So now I need to bring in another file. But before I do that, let me just show you the new type of file that I want to bring in. और वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. रॉ फाइल्स का मेरा जो फोल्डर है उसमें मैंने एक इजाफा किया फाइल का. एंड लेट मी शो यू दैट फाइल. ये देखें. So if you look closely to this file, you'll see that this is an Excel worksheet. So I can show you the properties, and there you go. It says Excel SX, which is obviously the worksheet extension. So now what we're going to do, and this is the first time that we are going to bring in a proper Excel worksheet into our workflow. So I'm going to exit here, और अब देखते हैं हम किस तरह ये मुमकिन है. I hope yeah, so there you go. एक मिनट. I think what I have done is accidentally opened two files, so I don't want to get into any kind of confusion. So let me just sort of close one file so that it becomes easy for me to manage this. मैं दोबारा मुझे फाइल खोलनी पड़ेगी. Working file 1. So
ओके सो तो जितनी देर में फाइल खुलती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अपेंड बेसिकली ना, क्लासिकली स्पीकिंग, लिनक्स के अंदर भी, डॉस के अंदर भी अपेंड कुछ प्रोग्राम्स में यूज होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हैं, खासतौर पे एडिटर्स जो हैं डॉस के अंदर भी और लिनक्स यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर, उसके अंदर अपेंड वो कमांड होती है जिसमें यूर बेसिकली एडिंग अप टू अ पर्टिकुलर फाइल। so for instance there is a file, worksheet or work, you know, dot whatever it is, इस नाम की एक फाइल है। अगर मैं अपेंड के ऑप्शन यूज करूं तो व्हाट आई कैन डू इज ओपन इट अप एंड आई कैन ऐड मोर मटेरियल टू इट। सो एक बात तो तय है कि अपेंड की ऑप्शन जो है ना वो, इट्स काइंड ऑफ इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ अ फाइल। So surely we've got sales 17, 18, 19, we've got three files. And what we can do is probably make one file out of it. That's because आगे जाके आप देखेंगे कि हम बड़ी आसानी से, फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे अपने डेटा के ऑप्शंस में चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एक रोलिंग कैलेंडर भी बनाया जा सकता है। एंड just follow me along and you'll get to know what I mean. But first things first, we need to make one file out of these three. सो इसमें अपेंडिंग डेफिनेटली यूज होगी। और याद रखो मर्जिंग नहीं है। इट्स वेरी इजी टू मिस्टेक इट बिकॉज मर्जिंग और अपेंडिंग सिमिलर वर्ड्स हैं। मर्जिंग इज व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग अक्रॉस अ क्वेरी, और उस क्वेरी के अंदर से कोई चीज उठा के पहली वाली क्वेरी के अंदर डाल रहे हो। आई मीन कॉलम्स, आई मीन यू कैन literally get all the columns and attach it, merge it into another query's columns. So that's merging. But right now what we want to do is add up all these rows together, एक दो तीन, इन तीन फाइल्स की। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल करें कि मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल जो कॉलम्स नेम्स जो है ना वो सिमिलर हो। So let's have a look at whether that really is the case, because I can see some discrepancy immediately. And the first discrepancy that I can see is that order ID 2017 के अंदर मेरे पास जो है ना इसका कॉलम डिफरेंट है। The column says order ID and the bracket that is unique. I need to get rid of it because if I go to 18 and 19 record तो इसके अंदर ये नहीं है। एक तो ये काम कर लेते हैं जल्दी से, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके अलावा भी थोड़ा देख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ऑर्डर डेट टू, सो बाकी सिमिलर है। बाकी आई एम श्योर देयर इज नो रियल डिफरेंस। वी कैन, you know, things will work out fine. So I also hope that the types are okay. That might also create issues sometimes. So yeah. So, okay, while I am at CH 2019, what I'm going to do is choose my append query option. Append query again, ज्यादातर मजे के ऑप्शन ना होम के अंदर ही है, which is brilliant. So बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइन है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, यू विल हैव टू गिव क्रेडिट टू माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइंड होती हैं। there's no doubt about it. So while you are at your ribbon home की options में, if I just push across, I'll see these two options combine, नीचे लिखा हुआ है ये। So yeah, these two options we are going to see, but first things first, we're going to see it append. Append में अगर मैं अपना menu देखता हूँ तो there are two options that I have. I've got append queries and append queries as new. So if I use this option, what it's going to do is create a new query, and in that new query I can do whatever I like. But इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर मैं सिर्फ append queries भी यूज कर लूँ, क्योंकि मैं इसी फाइल को 19 की फाइल को 18 और 17 का रिकॉर्ड ले आऊंगा। एंड देन आई कैन प्रोबेबली रिटायर दीज टू फाइल्स इफ आई वांट। सो लेट्स click append queries, and there you go. So what we have here is that we want to concatenate rows from two tables into a single table. That is exactly what we want to do. And दो tables हैं जो हम करना लाना चाह रहे हैं। इसमें 19 हमने ऑब्वियसली सिलेक्ट की हुई है। सो इट्स ऑलरेडी शोइंग यू दैट इट्स सिलेक्टेड 19. So I can bring in 17 and I can bring in 18. So this should really do the trick.
लेट्स सी क्या होता है। ओके कर दिया मैंने, लेट मी जूम आउट, एंड आई थिंक शायद इसने अपेंड कर दिया है। अब यहाँ अपेंडिंग क्वेरीज की ऑप्शन आपको नजर भी आ रही है स्टेप्स के अंदर। So just to ensure whether this has happened or not, what I'm going to do is go to my order date, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें तारीखें हैं, and what I can do is check my record here and load more करता हूँ मैं। 18 तो डेफिनेटली आ गई है, 17 भी है और 19 भी है, सो याद है, लुक्स गुड। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके भी देख सकती हैं। बट वन थिंग दैट आई फाइंड रादर strange या bizarre is that 17 बाद में दिखा रहा है। तो लेट मी जस्ट बी श्योर कि 17 है भी या नहीं है इसके अंदर। होना देखा तो था मैंने 18 19, या सो 17 इज राइट एट द बॉटम, दैट्स ओके। सो डिसेंडिंग में करके देख लेते हैं। There you go. So yeah, we've got a file that is neatly appended. One thing that I would like to do is just go through the columns and see if there is anything unnecessary in here. And order ID है, product ID है, store ID, order date, one, order date, two, sales, revenue. I've got my stock information, price, promo type. It looks brilliant. It looks very fine. There's no doubt that it's good enough. So अब चूंकि ये एक फाइल बन चुकी है 17 18 19 की, so what I can do is, let me just zoom in this for you, and what I can do is just rename it, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेता हूँ उसको मैं, और मैं कहता हूँ ये सेल्स का रिकॉर्ड है फ्रॉम 2017 to 2019, and I'm going to enter this. There you go. Now, do I need these two files? Maybe I do. I mean, these may come in handy, but you see, होता ही है कि जितनी फाइल्स आप ऐड करते जाते हो उतना आपका ना ओवरऑल रैम ज्यादा खर्च होता है। So what I really want to do is create a new group here, and I'll just call it something like retired files, maybe. And there you go. And 18 and 19 ये दोनों फाइलों को मैं रिटायर्ड फाइल्स के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। And there you go. I've got now these three files to work with, which is good enough. All right, so time to bring in another file here, and that is related to our store information. तो वो भी करके देख लेते हैं हम। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट फाइल्स दैट आई एम गोइंग टू इंपोर्ट। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। इंपोर्ट मैं इधर से निकल के भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले फाइल्स आपको इंपोर्ट करना सिखाई है। बट देयर लेट्स जस्ट learn another method of importing files, and this time what we're going to bring in is an Excel file. तो यहाँ पे भी आप न्यू सोर्स के बाद भी यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब हमें मालूम है कि जो फाइल हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं that's an Excel worksheet. So I'm going to click here, and surely enough it's showing me an Excel sheet, and you might be wondering कि ये सिर्फ बाकी फाइल्स कहाँ गई। भाई बाकी फाइल्स वही हैं, मगर ये ऑल फाइल्स में करूंगा तो बाकी फाइल्स भी दिखाएगा। मगर मैं वो चूंकि मैंने क्लिक ही एक्सेल वर्कशीट पे किया था, तो Excel is, Microsoft BA is smart enough to show me only the Excel files in the folder. और ये चूंकि है तो ये इसको ओके कर देते हैं, और लेट्स होप दैट द पावर क्वेरी ब्रिंग्स इन इट। ये देखें, ये आ गया। ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल आप जो लाना चाह रहे हो ना, उसमें ये वर्कशीट में ये एक शीट है। तो श्योरली हम कहते हैं कि इस शीट को ले आओ, इंपोर्ट कर दो, एंड नाउ इट्स गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम, एंड देयर यू गो। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, डिवाइडेड इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे कॉलम्स को कर रही है डिवाइड बिल्डिंग कॉस्ट में, लैंड एंड डेवलपमेंट के अंदर, एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट में। सो really good pieces of information. What we can do is use first row as headers, promote the headers, and there you go.
So these are numbers, these are numbers, these are numbers. Well, these store ID is really not a number. I mean, if you come to think of it, इसको number करने की जरूरत नहीं, इसको आप text भी कर सकते हो. That is because you're never really going to use store ID for anything that is aggregation. आप इसको बेशक बड़े आराम से कि इसका टेक्स्ट के अंदर चेंज कर दो, कोई मुजाइका नहीं है. ये तीन बिल्कुल दुरुस्त हैं. आई गेस दिस इज a good enough time to introduce and yes, in the class obviously we have spoken about it. So maybe what we can do is add another column here, or at least try to add another column here. And for that, maybe what we can do is use बल्कि इसको रहने दें आप, uh, because I can understand with that what we can do is use the custom column and this custom column from examples option to create another one. But uh, you know मैं DAX के जरिए ये preferably करवाऊंगा, but we can have a look, we can see whether this would work or not. From all columns हम कर लेते हैं एक custom. What I really want to do, not this one. I think it's bringing all the columns here. I just want these three. So from selection करते हैं हम, and these three are selected, and let me just see if I could add these three together. uh, ये ऑटोमेटेड इसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं. तो लेट्स सी, बिल्डिंग अगर मैं टाइप करता हूँ दिस प्लस land, no, it's not going to work like this. So yeah, these options are rather quirky, कभी काम करते हैं कुछ conditions में. These do not tend to work. Custom column करके देख लेते हैं, that might work. So what I really want to do is probably make total cost column, and what we have here is the building cost. I want to insert that. I want to add it to land development, and I want to add it to other related costs. Let's see if it works. There you go. So अब मेरे पास total cost का column निकला है, which is brilliant because this helps me also understand कि total cost क्या आ रही है store ID के हिसाब से. तो यही काम हम DAX के अंदर भी कर सकते थे. तो भी DAX हमने क्लास में नहीं किया, तो आई एम जस्ट holding it for the session that we're going to have in the class anyway. So yeah, this is clean. I can save it. And hoping that there are no errors. और सो एक चीज जरूर देखिएगा कि ये 17 और 18 को लोड कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा टाइम लग रहा है. एंड आई डोंट वांटेड टू डू दैट. दैट इज बिकॉज आई हार्डली यूज दिस फाइल्स एनी मोर. रिटायर्ड फाइल्स है मेरे लिए ये. एंड रियली देयर इज नो नीड फॉर Microsoft BI to kind of waste time loading these. That's because मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है. आई डोंट थिंक दीज आर गोइंग टू चेंज. I'm going to right click and say इनेबल लोड में जो टिक हुआ है ना, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ. इसी तरीके से जो पॉसिबल डाटा लॉस कह रहा है कि डिसेबलिंग लोड विल रिमूव द टेबल फ्रॉम द रिपोर्ट एंड एनी विजुअल, दैट इज फाइन. एंड मे बी आई जस्ट वांट या सो दैट्स गॉन. 2018 का भी कर लेते हैं हम, इसको भी हटा देते बिकॉज दीज फाइल्स आई हैव ऑलरेडी इसका डेटा मैं सेल्स में ले आया हूँ. सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट and see if things still work perfectly. This time अगर मैं रिफ्रेश प्रेस करता हूं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है. uh, you just save it.
there you go. So it has not taken a lot of time, which is really great. Now what I need to do is have a look at another option. स्टोर सिटीज में मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, स्टोर की जो चीज मेरे पास नहीं है और जो होनी चाहिए वो है ये चीजें. Maybe these things. Maybe I just want to bring in the total cost column here. That is because I want to know कि एक particular store ID से associated cost क्या है. सो आइडियली स्पीकिंग इन दोनों के कनेक्शन जो कि मॉडलिंग अभी तक हमने नहीं किया, मॉडलिंग के जरिए होना चाहिए. वी शुड नॉट रियली बी ब्रिंगिंग इन इट, बट यू मस्ट नो दैट इफ यू नीड टू ब्रिंग इन अ कॉलम तो क्या करना है. तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो टोटल कॉस्ट का कॉलम है, इनफैक्ट मैं सारे कॉलम ला सकता हूँ, सारे कॉलम बल्कि ले आते हैं. मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे कॉलम जो है ये इसके अंदर आ जाए. इसके अंदर क्या होगा कि स्टोर आईडी सर्च करेगा स्टोर आईडी को और जो मैच होगा उसको पकड़ के ले आएगा. So let's try to do that. Now this time around, the option that I'm going to use is the merge query option. There you go. I'm going to click it and I'm going to uh, tell it कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या है. स्टोर सिटी को, सॉरी, स्टोर सिटी तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको स्टोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इसके कॉलम जो है ना मैं चुराना चाह रहा हूँ. सो वो पूछेगा मुझसे कि आपकी जो कौन सा कॉलम है जो मुश्तरक है. तो ये मुश्तरक कॉलम जो है मैंने दिखा दिया इसको. दीज आर द कॉलम्स विच आर कॉमन एंड दिस विल अलाउ द मर्ज to pick up the data and get it across. And I'm going to say okay, and don't worry about this. Had I had a little more time, I would have explained exactly कि joins क्या होते हैं. Anyway, let's ये चूंकि selection match कर गया, and if you really look here, the green tick is telling you that everything's good. I say okay, and there you go. It has brought in all the tables. The only thing is that we need to tell, उसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको. वी नीड टू टेल BI के एग्जैक्टली क्या चीजें लेकर आनी है दूसरे कॉलम से इस कॉलम के अंदर. सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर and now I have the capacity to really bring in the columns that I want. For instance, I just wanted one column here, total cost, तो मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा. अगर सारे कॉलम लाना चाहूँ तो वो भी ला सकता हूँ. लेट्स जस्ट ब्रिंग दीज 1 2 3 4 कॉलम्स, टू रेडी भी ला सकती हैं. बाद में डिलीट करना पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि उसका काम नहीं है. तो देयर यू गो, ये आप सारे कॉलम ले आए यहाँ पर. अगर मैं अब मूव करके आपको दिखाऊं तो you'll see that my columns are here. So yeah, technically this maybe does not make a lot of sense. That is because there is an ID here and there's an ID here and they're the same IDs. So yes, this needs to be completely dropped and removed. और अब आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और जाहिर है वो उसने पहले उसका जिस कॉलम से लाया उसका भी नाम वो आपको बता रहा है, विच इज चोर्स. So this is the construction one, this is land and development, and this is for other related. I don't want any of these, so I'm going to delete these as well. I just want the total cost column. तो ये total, इसको मैं total cost का column कह देता हूँ. और ये लीजिए, ये आपके पास merging का concept भी हो गया है. And let me just save it and apply, and there you go. Okay जी. So before I sort of wrap up this video, इसमें मेरा ख्याल में मोड्स में जाके ना कुछ चीजें जो है ना चेंज करनी चाहिए हमें.
Let me just stop this and go back here. I just want to be sure that मेरी screen जो है ना आपको साफ दिखाई दे रही है. Let me just close this. Um, and ये आ गया हम. अच्छा, अब what I really want to do is explore the new mode, because रिपोर्ट पे तो हम आएंगे ही आएंगे, मगर मैं डेटा पे जाके ना कुछ चीजें दुरुस्त करना चाह रहा हूँ. I'm going to press data and इसकी भी थोड़ी सी आपको पावर दिखाना चाह रहा हूँ. If I go to suppose the uh, sales data, तो यहाँ पे what I can do is start changing things now. For instance, revenue क्या है, ठीक है. यू नीड टू टेल एग्जैक्टली कि रेवेन्यू क्या. फॉर इंस्टेंस इफ यू नो कि रेवेन्यू डॉलर्स के अंदर है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो. So now you can tell कि your revenue is basically, let me just undo this and try it again. कि revenue आपका जो है that is a currency, okay, and इसका आप define भी कर सकते हैं कि कितना रखना है decimal points पे. Just my mouse not working very well. Summation भी आप इसकी बता सकते हैं, and I'll also at some point time tell you exactly कि ये क्या चीजें हैं. तो ले जी, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स सपोज 1, मे बी 2 इज इनफ. और इसी तरह यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा डॉलर जो है ना, या कौन सा पाउंड, या कौन सी करेंसी है जो आप इसके साथ मुंसलिक करना चाह रहे हैं. राइट. सो ये अब आपके सामने आना शुरू हो गया. सेम गोज विद प्राइस. ठीक है. तो ये डेफिनेटली आप इसको एक और तरीके से भी कर सकती हैं, और वो ये है कि अगर आप, या नो, ये आपको खुद ही मैन्युअली ही करना पड़ेगा आई थिंक. तो अगेन यू हैव टू स्पेंड सम टाइम sort of defining what's happening here. तो इसको आप करेंसी करोगे. करेंसी क्यों नहीं दिखा रहा इसी. आई थिंक दैट इज बिकॉज हमने अनफॉर्चुनेटली प्राइस जो है ना, इसको शायद टैक्स रखा हुआ है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज. और आपको इसको डाटा क्वेरी मोड पे जाके देखना पड़ेगा. लेट्स सी इफ वी कुड डू दैट, बिकॉज ये भी टैक्स दिखा रहा है यहाँ पे. इफ आई ट्राई टू चेंज इट टू अ डेसिमल नंबर, लेट्स सी. यस. ओके, तो यहाँ नहीं कर रहा ये. अब आपको डेटा क्वेरी मोड पे जाके करना पड़ेगा. तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स अबाउंड इसमें. आपको यू हैव टू बी मेक श्योर कि कहीं कोई डेटा टाइप्स जो है ना सारे बिल्कुल दुरुस्त उनका तयन हो. सो या देयर यू गो, ये गलती हुई थी हमसे. प्राइस इज, यू नो, इट शुड हैव बीन अ फिक्स डेसिमल प्लेस. बाकी भी एक बार देख लेते हैं हम. लुक्स गुड. तो उसको वापस चले जाते हैं. Going to apply the changes. Okay, so now some kind of an error has shown up, and I wonder why. Let's have a look. Because what I believe कि ये पहले एरर नहीं आ रहा था, ये अभी हमने जो प्राइस का किया उस पे एरर आ रहा है. दैट मीन्स कि
प्राइस के कॉलम में कहीं ना कहीं एन ए वैल्यूज होगी जिनकी वजह से इशू आ रहा है, विच मीन्स के जो हमारे पिछले टेबल्स से जो हमने मर्ज किए 17 या 18, उसमें कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर कुछ एन ए वैल्यूज थी जो हमने अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मिस कर गए हम. So yeah, you can actually have a look as what is happening here using this error. But if your system is slow, ये देखिए ये अब वो दिखाना शुरू हो गया error. ये uh, but I can assure you कि problem वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ. And this can be a pretty nasty problem. So now how to rectify it? I'm glad that it has come up. और ये देखो ये दिखा रहा है details NA. So what we can do is probably start undoing things. और अब हम प्राइस पे जा सकते हैं. ये है प्राइस. एंड लेट्स सी इफ देयर आर एनी वैल्यूज. तो नहीं है इसमें. देन आई बिलीव इट शुड रियली वर्क आउट. बट लेट्स जस्ट give it a little opportunity to load everything because it's now it's a pretty large file. तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है लोड करने में. या सो जस्ट लोड मोड दोबारा करके देखते हैं. माइक्रोसॉफ्ट बीआई कैन बी अ लिटिल रिसोर्स एक्सटेंसिव. अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है यहाँ पे नीचे. we could not convert to number. So surely the problem here is that there is some NA values in the original files और हमने अपेंड तो कर दिए हैं मगर पहले चूंकि सही तरह नहीं की हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है ना कर गई है सी पिन. और अब उसको प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को कन्वर्ट करने के अंदर. फेयरली नास्टी प्रॉब्लम. लेट्स जस्ट कम बैक हियर. और अब देखते हैं हम प्राइस को. और सॉरी यहाँ से हमें चेंज करना चाहिए था एक्चुअली बिकॉज दिस इज आर रेलेवेंट क्वेरी. So let me undo this and this and ओके यहाँ तक. अब देखते हैं यहाँ पे प्राइस में क्या सिचुएशन है. को लोड करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं. एंड या सो दैट्स इट. ये देखें एन ए वैल्यू जो है ना यहाँ पर आ रही थी. सो अगेन बी वेयर ऑफ दिस. प्राइस वाला जो है ना मामला इसमें कहीं ना कहीं एन ए वैल्यूज आती हैं. अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं. and we can say that we want to replace NA values with 1 0 rather क्योंकि determine नहीं में. एक मिनट. ट्राई दिस अगेन. सी के NA क्यों नहीं दिखा रहा. ये NA. तो उसको अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करता हूँ set A values with. So there is an error here that says enter our number value. Okay. NA and the 1. Oh, ये है वो वैल्यूज. लेट मी जस्ट हैव अ लुक कि यहीं कहाँ से हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिलेक्ट ऑल. हटाता हूँ. सिर्फ एन ए की वैल्यूज उठा के ओके करता हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू सी के वेयर डिड दिस एन ए वैल्यूज रियली कम फ्रॉम बिकॉज आई रियली थॉट दैट आई क्लीन एवरीथिंग. सो ये 2018 के टेबल के अंदर है. 2018 का टेबल जो कि मैंने रिटायर कर दिया. लेट मी गो देयर एंड
इसमें हम देख लेते हैं प्राइस को, और एन ए ये आ रही। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू रिप्लेस इट हियर, रिप्लेस वैल्यूज एन ए विद 0, ये हो गया। सो गुड, गुड इनफ। अब हम वापस आएंगे यहाँ पर, एंड भी अब हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ये एक्चुअल फाइल जो है ना 2019 की है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोबारा, और उसके बाद फिर ऐड करना पड़ेगा। हेडर्स तक मैं ले आया हूँ, एंड नाउ व्हाट आई रियली नीड टू डू इज, इनफैक्ट ये मैं एक स्टेप आगे चला गया हूँ। व्हाट आई रियली शुड हैव डन इज कि उसको रिटेन रखता। बहरहाल इसको हम दोबारा कर लेते हैं। को this is obviously the locale UK, and this is the date. There you go, this looks fine. ये सारी की सारी ऑटो पे डिटेक्ट करवाते हैं हम। There you go. This is also okay now, and uh, बाकी प्राइस देख लेते हैं हम। प्राइस का प्रॉब्लमैटिक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें ओरिजिनली 19 के अंदर एनए है या नहीं, आई थिंक नहीं है। यस, सो नाउ अगेन हमें अपेंड करना पड़ेगा। और दो ये आपकी 17 to 19 कह रही है, बट मैंने वो डाटा निकाल दिया है। दैट इज बिकॉज उसमें 18 जो वाली फाइल थी उसमें एनए वैल्यूज थी, अनफॉर्चुनेटली। लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। हम दोबारा कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अपेंड पे चले जाते हैं, और अपेंड पे व्हाट आई रियली वांट इज द डेटा फॉर 70। अच्छा, एक बात, बिफोर आई डू दैट, इफ यू वांट टू बी श्योर, व्हाट यू कैन डू इज ऑर्डर डेट पे जाके ना आप देख सकते हैं कि कौन सी साल की वैल्यूज हैं, क्योंकि मैंने डिलीट किया है। आई जस्ट वांट टू बी श्योर, सिर्फ 19 की है, देखें। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज गो टू अपेंड, और ये 17 और 18 जो मैंने रिटायर कर दी हुई थी ये सोच के कि ये बिल्कुल क्लीन है, उसमें से एक सिर्फ कॉलम की वजह से सत्यानाश हो गया। सो नाउ आई गॉट 19, 17, 18, एंड ऐसे ओके। एंड देयर यू गो। अब अगर मैं ऑर्डर डेट अपना देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास तीनों सालों की वैल्यूज आ जानी चाहिए। 18 आ गई, 19 एंड 17। सो या दिस इज डन नाउ। One last time, I would like to have a look at price, and I hope that there are no NA values there, because अगर अभी भी होंगी NA values, so I cannot do anything about it. Yeah, so there are no NA values. एक हमने मिस्टेक की थी, रेक्टिफाई भी कर ली। अच्छा हो गया, आपको पता चल गया कि अगर कोई इस तरह की मिस्टेक है तो कैसे रेक्टिफाई करनी है। आई एम गोइंग टू क्लोज इट, and I can save my file, and now I can go to my data mode। और अब मैं यहाँ जाके अपनी जो प्राइस है इसका टाइप जो है चेंज कर सकता हूँ इनटू इनटू डेसिमल नंबर। सो ओके, या सो दिस टाइम होपफुली इट विल वर्क, और लुक्स गुड। बाकी डॉलर है, डॉलर भी आगे साथ। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आप किस तरह डाटा दिखा रहे हो, आपकी नीड क्या है।
इसी तरीके से जो डेट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस ये डिलीवरी डेट 1 जो है ना, इसका आप फॉर्मेट सिंपल अगर रखना चाहते हो, शॉर्ट डेट वो भी रख सकते हो, लाइक दिस। सेम केस यहाँ पर है। यू कैन रियली मे बी ये आप थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहो, रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुकिंग एट थिंग्स। सो बट आई थिंक शॉर्ट डेट ही रखते हैं हम इसको। तो ये ले जी, ये आ गया। तो ये आप इस मोड के अंदर एक एक करके आप सारी अपनी जो फाइल्स है ना उनको ठीक कर सकते हो, उनको वेल डिफाइन कर सकते हो। इसमें एक चीज याद रखें, जहाँ सिटीज वगैरह का या स्टेट्स का है डेटा, फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, तो यहाँ पर व्हाट यू कैन रियली टेल BI इज के ये जो पार्ट है ना, ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, इट्स अ ज्योग्राफिक sort of a data. Let's go rather here city पे. So there used to be an option here. Uh, okay, ये आ गया। डेटा कैटेगरी के अंदर would you could tell it that it's a city. स्टेट पे चले जाते हैं हम, can tell it that it's a एड्रेस कह सकते हो उसको, मगर स्टेट है हम इसको स्टेट ही कहेंगे। सो अगर आप देखो जैसे आप इसको कर रहे हो ना, इसके साथ एक नक्शा सा बना हुआ आ रहा है, टाइप्स। ये अच्छा होता है, आपको पता चल जाता है कि टाइप्स बेसिकली क्या है डेटा की। सो टोटल कास्ट इज इन डॉलर्स आई गेस। आप इसको चेंज कर सकते हैं अभी ये। आई डोंट नो व्हाई इज इट शोइंग टेक्स्ट, बिकॉज आई थॉट आई कन्वर्टेड इट इनटू एनीवे, ठीक है। इसको यहाँ से भी चेंज आई होप किया जा सकते। ये ले, एंड इट्स अ डॉलर। ये ले जनाब, इस तरह और कोई देख लें यहाँ पे और कोई चेंज होने वाला तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज को उस तरह करूं डिफाइन, बट आई एम श्योर while you're working for your projects or you're doing stuff, तो आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी कॉस्ट है। I'm just going to select all these columns and I'm going to try to convert them into whole numbers. And these are dollars. So brilliant. There you go. ठीक है जी। सो काफी हद तक अब मामला इतना सीधे हो गए हैं इस डेटा के। अब what I can do is go back to my report form and I'm going to save my file, और आई थिंक दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई, एक एरर, अच्छा हो गया एरर आ गया, ताकि आपको पता चले कि एरर कैसे रिमूव होगा उस तरह का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अब आपको मैं इनकी रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखाऊंगा।